पोलिनेटिंग एजेंट थ्रू व्हिच पोलिनेशन टेक्स प्लेस जहाँ द्वारा कि पोलिनेशन होता मैं पूर्व क्लास आलोचना करते डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट थिला आमे हाइड्रोफिली जूफिली इमिति बायोटिक और एबायोटिक कथा आलोचना करते बायोटिक रहा कौन इनसेक्ट पोलिनेशन जोड़ा एंटेमोफिली जूफिली हमर चेरिटेरिफिली ऑर्निथोफिली मिर्मिकोफिली ओफियोफिली मालाकोफिली एति गेला का भितरे पढिथिले हमें बायोटिक एजेंट थ्रू व्हिच पोलिनेशन टेक्स प्लेस और एबायोटिक एजेंट जहाँ जीवन नहीं से एजेंट मान द्वारा कौन होता आम गोटे विंड पोलिनेशन जोड़ा एनेमोफिली आ गोटे करते वाटर पोलिनेशन जोड़ा हाइड्रोफिली दुटा पढ़ी मन रही समस्त आज पढ़ा आम ता पूर्व कौन पढ़ी ना पोलिनेशन कौन पढ़ी पोलिनेशन रू जो प्रोसेस जो मेल गामेटोफाइट बा डेवलपमेंट ऑफ मेल गामेट्स फ्रॉम पोलन ग्रेन एटी पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गामेट फ्रॉम ओभारी बा ओभारी भितर जोड़ा कहते ओव्यूल अच्छी बा जोड़ा को मेगास्पोरांजियम द एग कंटेनिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन ओभारी कॉल्ड ओव्यूल और मेगास्पोरांजियम मन रहा द एग कंटेनिंग ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड ओभारी इज कॉल्ड मेगास्पोरांजियम और ओव्यूल एग कंटेनिंग माने सेठी जिमिति आमे कहले माइक्रोस्पोरांजिया कहा कहले द स्पोर कंटेनिंग बा माइक्रोस्पोर कंटेनिंग ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड एंथर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरांजिया एटी से गुलिया हमें पढिले मेगास्पोरांजियम कोन द एग कंटेनिंग ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड ओवरी इज कॉल्ड मेगास्पोरांजियम और ओव्यूल बुझिला ना ओव्यूल रो स्ट्रक्चर करिवा जनरली एटा तो पढ़िबा या पूर्व आमे फास्ट जानिबा कोन ना फीमेल सेक्स ऑर्गन कोन को या पूर्व कहि देनी फीमेल सेक्स ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स फीमेल सेक्स ऑर्गन कोन द फोर्थ होल ऑफ ए फ्लावर गोटे जदि बाइसेक्सुअल फ्लावर हेदिवो तार चतुर्थ होल बा ताको कहै जाय फीमेल होल दैट इज ए गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स but the individual member of gynecium is called carpel. A carpel consists of three parts: ovary, style, and stigma. Ovary, style, and the ovary, style, and stigma. It constitutes a carpel or female sex organ. Hello? Ovary, style, and stigma. The megasporangium present inside the ovary. जैसे हमें माइक्रोस्पोरांजिया पढ़ुले present inside anther, it present inside ओभारी बा तो ओभारी ताको हमें अदरवाइज ओभारी भितरे जो स्ट्रक्चर रहइबो ताको हमें ओव्यूल बा मेगास्पोरांजियम तो ओभारीटा कंटेन करूची कोन ओव्यूल बा मेगास्पोरांजियम तो वर्तमान हम पढिबा स्ट्रक्चर एटा जानिलो ना स्ट्रक्चर ओव्यूल और मेगास्पोरांजियम पढिबा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म मानकरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल देखा जाए से टाइप्स गुड़ा कही देबा आगे तापर स्ट्रक्चर टा पढिबा से कि बही रो आगे देछि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल तापर टाइप्स देछि तो हमें खाली जनरली कथा गुड़ा जानिता गुडे ओव्यूल रो स्ट्रक्चर साधारणतः गुडे स्टॉक थिबो कोन थिबो स्टॉक बा फ्यूनिकिन माने जोटार ओवरी टाकू से धरुदबा ओव्यूल टाकू जे धरि कि रखे टोटल दुईटा पार्ट तार गुडे बॉडी आ गुडे स्टॉक टोटल बॉडी मनकर एबला गुडे स्ट्रक्चर करूछि नंबर होबो
ହେଲା। स्ट्रक्चर ऑफ ए ओव्यूल रो फिगर टा करी सर ता बुझी दो इंटेगुमेंट्स ହେଲା। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल स्ट्रक्चर कहार एनाट्रोपस गोटे इन्वर्टेड ओव्यूल स्ट्रक्चर ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ बा मेगास्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ जनरली बा ब्रॉडली इनटू टू पार्ट्स ए बॉडी देखो टोटल डाला बॉडी एंड ए स्टॉक और फ्यूनिकल कौन कौन अछि दीटा पार्ट मेनली गोटे ला टोटल बॉडी एंड ए स्टॉक माने गोटे स्टॉक जो और फिलामेंट जे धरिकी रखी बॉडी टाकू जे धरिकी रखी बेर करछि सेला स्टॉक बा फ्यूनिकल टोटल हला बॉडी हला द ओव्यूल एटा हला ओव्यूल स्ट्रक्चर ओव्यूल सराउंड्स बाय एनसर्कल बाय ए पैरेन्काइमेटस टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा एटी गोटे प्लासेंटा टा देखे हो नाही ए प्लासेंटा टा ए जो ओव्यूल टा ए प्लासेंटा भितरे अछि मन रुजी ना प्लासेंटा होची कोन ना पैरेन्काइमेटस टिश्यू व्हिच हेल्प्स फॉर व्हिच nourishes which provides nourishment to the developing ovule बा मेगास्पोरेंजियम को डेवलप करिवारे के साहाय्य करे प्लासेंटा जोटा कि पैरेन्काइमेटस इन नेचर हला देन आसिला इंटेगुमेंट्स एटी लेखि जिमो इंटेगुमेंट्स the body of the ovule covered by 2 or 3 layers called integuments. In case of angiosperm, generally 2
layers or two coverings are present in a ovule body, that is called integuments, which helps for protection, which protects the ovule. এই যে এইগুড়াক আছে ইন্টেগুমেন্টস মানে কভর, মানে যে কভর করি কভরিং গুড়াক কুହାଯାଏ ইন্টেগুমেন্টস। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଥାଅ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଇନ୍ ନେଚର। ଦେନ୍ ତାହେଲେ ଗଲା ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟେଗୁମେଣ୍ଟସ୍, ଥାର୍ଡରେ ଆସିଲା ନ୍ୟୁସେଲସ୍। କଥା ଟିକେ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁସେଲସ୍। ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ହେଲା ଏ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ tissue which provides nourishment to the developing embryo sac. Hello? Na secondary to photo jao. जैसे इधर दीदा रखने बसे हो जो भी इधर बसे तो जो भी ना से सब लोग इधर बसे तो जो भी इधर बसे से बसे तो आचरण ना कौन जानिले प्लासेंटा, इंटेगुमेंट्स, तापरे न्यूसेलस। न्यूसेलस कोन न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट सेंट्रल पोजीशन ऑफ द ओव्यूलर मेगास्पोरांजियम। मेगास्पोरांजियम रो सेंट्रल पोजीशन रे के अछि गुडे न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट, ताको कहै छै न्यूसेलस, व्हिच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग मेगास्पोर और एम्ब्रियो साक। एटा हला मेगास्पोर और एम्ब्रियो साक माने सबोटर पूरा क्लियर हो जिवो। तमे देखो हेटी आंतर रु माइक्रोस्पोरांजियम कोन माइक्रोस्पोर डेवलप होला, माइक्रोस्पोर रु पोलन ग्लैंड ना कोन हमरो मेल गामेट। एटी हला से बळा मेगास्पोरांजियम ओवारी, ओवारी भितरे ओव्यूल बा मेगास्पोरांजियम, मेगास्पोरांजियम भितरे मेगास्पोर और एम्ब्रियो साक, एम्ब्रियो साक भितरे एग। मोइटी जो एग apparatus लिखिछि, एग apparatus कंसिस्ट ऑफ टू सिनर्जिड, मो से लिखि नै एकत्र एग apparatus लिखि दिछि। एटी लिखि दोछि लैटरल सिनर्जिड्स। ए जो टू लैटरल साइड रे जे अछि कोडर दी पाखरे जे अछि से सिनर्जिड त कोन एटा हला एग एंड बस मिडिल लिख दियो, मिडिल एटा पाई गेले। तमरे हमर एठी पर्यंत हमें पढिबा एग जोटी जे डेवलपमेंट होबो जेतबेले पर्यंत हमें एही कथाटा टोटल पढिबा। एटा जानि देले कोन न्यूसेलस, प्लासेंटा, इंटेगुमेंट्स। फास्ट जानिले बॉडी अछि, फ्यूनिकल अछि बा स्टॉक अछि, बॉडीटा कवर हेछि प्लासेंटा टिश्यू द्वारा, प्लासेंटा तो नरिशमेंट जो है। तापर आसिला इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स जानिले कवरिंग ऑफ द बॉडी। तापर जेटे न्यूसेलस गुडे न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द सेंटर ऑफ ए ओव्यूल व्हिच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक बा फीमेल। एटा हला फीमेल गामेटोफाइट स्ट्रक्चरटा एटा केवल ए टोटलटा हला मेगास्पोरांजियम। फीमेल गामेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 8 सेल स्टेज कोइ कोछि। तापर आसला एम्ब्रियो सैक। का परे न्यूसेलस परे के आसला एई बळे हेडिंग करी कि नोट रे लिखा आइतो बहिरे लिखो बा तमे बुझिबो एई अनुसार लिखिबो। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूसेलस। यार डेवलपमेंट किबि देला हम करे पडिया, खाली स्ट्रक्चर विषय में कहूची। इट कंसिस्ट ऑफ 8 सेल स्टेज के एम्ब्रियो सैक कंटेनिंग 8टा सेल बा 8 सेल न्यूक्लियस एंड 8 सेल स्टेज रे रहता है एम्ब्रियो सैक डेवलप होई के एया होई। आउट ऑफ 8 सेल फोर्स each pole contains 4 nucleus each बा 4 cell each। एटी तीनटा लिखि ना एक्चुअली एटी चारि थाए। ए डेवलपमेंट परे एई बळा हे जाय, बुझि पड़ला ना। तने गुटे एम्ब्रियो सैक रो प्रथम स्टेज रो केतरा थाए टोटल 8टा सेल 8टा न्यूक्लियस। आफ्टर मैच्योरिटी जेतले मैच्योर हे जाय 7टा सेल एंड 8टा न्यूक्लियस। 8 nucleated but 7 celled. Out of 7 celled, 3 present at the antipodal end and 3 present at the
माइक्रोपाइलर एंड एटा होची गुडे माइक्रोपाइलर एंड थ्रू व्हिच fertilization takes place by pollen tube enters through this process by through this aperture ei process ei aperture देकी pollen tube टा एंट्री करे मैक्सिमम एंजियोस्पर्म ता छडा भी अछि एपटे एंट्री करि पारे ता छडा अछि एपटे भी एंट्री करि पारे माने तीनटा एंट्री अछि परे अछि बोली मु छडा कहू नै एटा जानिलो एपटे रीजन टा कोन जो पटेर तार एक अपरेटस लागि दियो सही साइड टा को कह जाय माइक्रोपाइलर एंड तार ठीक अपोजिट टा कह जाय चालाजाल एंड मन रहले ना चालाजाल एंड एपट एटा हला माइक्रोपाइलर एंड हला तने एम्ब्रियोस आर कंटेनिंग 8 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड ड्यूरिंग जुवेनाइल पीरियड बा फर्स्ट स्टेज रो आफ्टर मैच्योरिटी इट बिकम्स 7 celled and 8 nucleated. Out of 7 celled, 3 present at the chalazal end is called antipodal cell and 3 present at micropilar end called egg apparatus which contains 2 lateral synergid and the middle one is egg. And 2 cell present moves to the ei dekho katra hitila 8 ta mu koi dini 8 ta ethi 3 रहगला एठी 3 रहगला एठू गुटे पळे सी मिडिल की बा सेंटर को एठू गुटे पळे सी सेंटर को पळे देखो 2 polar nuclei fuse in the central position of a embryo sac to form secondary nucleus which is 2 nucleated 2 nucleus नहीं बा binucleated but सेल केतटा गुटे एटा जेहेतु सेकेंडरी न्यूक्लियस करला मु तुमको देखिया पे एबला दिटा चित्र करी किंतु एटा गुटे हे जो ना सेलटा गुटे किंतु एटा डिप्लॉयड नेचर से में एठी दीटा न्यूक्लियस है 3 2 5 3 8 माने जनरली एम्ब्रियो सेल बिकम्स 8 न्यूक्लिएटेड मैच्योरिटी कोन बिफोर मैच्योरिटी कोन सब बोले 8टा न्यूक्लियस दर थाए सेल केवल गुटे कमी जाए जेतले मैच्योरिटी जाए एटा हे जाए कोन सेंट्रल सेल बा सेकेंडरी न्यूक्लियस हे जाए हला एति की कथा टोटल बुझी बलना द स्ट्रक्चर कोन ए मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल mainly contains 2 parts a body and a stalk by stalk or funicle and a body stalk or funicle attaches with the body is covered with a parenchymatous tissue called placenta which gives nourishment to the developing ovule को develop by megasporangium develop करियर से साथ में placenta टा then ovule body covers 2 to 1 or 2 layers of cells that is called integuments एटा सब इंटेगुमेंट्स रहला हम ये पूर्व कोइ दिबा जनरली एंजियोस्पर्म टा बाइटेगमिक माने 2 layers of इंटेगुमेंट्स आर प्रेजेंट कहर अछि जो माने पैरासाइटिक प्लांट लॉरेंथस एमिति सब पैरासाइटिक प्लांट अछंती के रूट माने पार्शियली स्टेम पैरासाइट पार्शियली रूट पैरासाइट समानकर आटेगमिक विदाउट इंटेगुमेंट्स तांकर इंटेगुमेंट्स न थाए माने रहला कहर नै किछि पैरासाइटिक प्लांट रे जो जेतले मेगास्पोरेंजियम डेवलप हुए विदाउट इंटेगुमेंट्स सेदिमे ता कोन कहै जाय आटेगमिक ए माने नेगेटिव विदाउट टेगमिक माने टैग माने कवर न थाए एटेगमिक जनरली किंतु बाइटेगमिक देखा जाय हम सिर्फ बाइटेगमिक काटी जंदी दिटा काटी जंदी बाइटेगमिक हला ये स्ट्रक्चर विषय जानिले इंटेगुमेंट जानिले तापर असला न्यूसेलस हला ना माने कोन न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द सेंटर ऑफ द ओव्यूल व्हिच नरिशेस व्हिच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सेल बा फीमेल गामेटोफाइट चलला देन एम्ब्रियो सेल ता छडा एटा भी लिखि दियो ओव्यूल बॉडी रो दिटा पार्ट अछि अपर पार्ट बा द गुडे पार्ट हला अपर पार्ट इन केस ऑफ अनाट्रोपस एटा अनाट्रोपस काटी छी म कहू छी एबरे ओव्यूल टाइप्स कहू छी अनाट्रोपस ना इन्वर्टेड हे जाई छी एक्चुअली माइक्रोपाइल ता ऊपर को रहला माने से हे जो ऑर्थोट्रोपस कहू छी तने दीटा रीजन देखा जाय गुडे माइक्रोपाइलर एंड गुडे चालाजल एंड देखा जाय दीटा एति कथा न्यूट्रो एम्ब्रियो सेल विषय जानले 8 सेल स्टेज रहता है 8 सेल तीनटा ऊपरे तीनटा तळे अछि चालाजल एंड तीनटा एंटीपोडल सेल
तले जो माइक्रोबाइलर एंट्री रहला त कोन एग apparatus which contains lateral to synergid and one egg and other two polar nuclei moves to the central cell to make to form a secondary nucleus हला एतिक टोटल द स्ट्रक्चर जन पढिया टाइप्स ऑफ ओव्यूल एटा सब काटी सेट सब लेबलिंग कलो ना जहाँ बुझु करो ये साइड रे करू अरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल सर ओव्यूल स्ट्रक्चर अनुसार ओव्यूल रो टाइप्स है जी कौन टाइप्स असला ऑर्थोट्रोपस ऑर्थोट्रोपस तापरेला अनाट्रोपस तापरेला हेमिट्रोपस एम्फिट्रोपस कंपाइलोट्रोपस सिल्सिनोट्रोपस हला केते प्रकार देखा हो नहीं चलो ऑर्थोट्रोपस अनाट्रोपस हेमिट्रोपस एम्फिट्रोपस कंपाइलोट्रोपस एंड सिल्सिनोट्रोपस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल तमर कोर्स नाही किंतु जानिया पय एटा आवश्यक अछि हमर ये क्वेश्चन कोड आसीओ देखियो अनाट्रोपस फर्स्ट असला ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कोन ये स्ट्रक्चर ठीक जानि पेलो ना ना पचर कहबे सब काटि दिलन सर जेडी किछ जानि हो बुझि पेलो ना बस स्ट्रक्चर जानि पेलो ना कोन जगह भूल जानि पेलन रहि गेला ओ स्ट्रक्चर कोन कहै जानि पेलो ना एठी भी आउ गोटे अछि हाइलस एटा जोडी जॉइंट हैछि लेखि करि नै तो एति की जानो लिखौछि माने समस्त चित्र डिग्री चित्र करिवा तो फर्स्ट आसिला ऑर्थोट्रोपस मींस स्ट्रेट ओव्यूल स्ट्रेट माने जोड़ा सड़क दिबो ता माने एटी उल्टा ही जाई यार माइक्रोपाइल ताने माइक्रोपाइल चला जा आर इन स्ट्रेट वन स्ट्रेट लाइन गुटे स्ट्रेट लाइन रे दिबो किमे दिबो